सो आम पॉलिटी रू स्टार्ट करवा आम प्रिलिम्स रिविजन सीरीज पॉलिटी रे आम जमी जाचु आम कॉन्स्टिट्यूशन उपरे पढ़ू तो पॉलिटी रो बैकबोन होची और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज द रूल ऑफ द लैंड ओके तो से रूल ऑफ द लैंड रो इवोल्यूशन आमर रेगुलेटिंग एक्ट होइतला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो रेगुलेटिंग एक्ट होइतला तो सब पॉलिटी बुक रो स्टार्टिंग पार्ट होची तमर चार्टर एक्ट रो ओके तो चार्टर एक्ट रू आम स्टार्ट करवा जेतु पॉलिटी इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन सो evolution of constitution it originated from the act and policies of east india company and the rule were developed by the british government india re tamara 26 january 1950 india became a republic first india dominion status paila in 1950 sorry india dominion status paila with independence of india act in 1947 1950 re india became the republic a sovereign democratic republic okay ଆଉ की रोल तमरो बी आर अम्बेडकर को थला ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी प्रोसेस एवडा सब हमें देखियो या पर चैप्टर रे तो कॉन्स्टिट्यूशन रो इवोल्यूशन जेमती जो तमरो एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इट इवॉल्व्ड इन टू पीरियड्स फर्स्ट होची गोटे होची कंपनी रूल 1773 टू 1858 these were governed by the charter acts then comes the crown rule 1858 1857 ଆମର 1857 revolt ପରେ 1858 to 1947 it was all about company rule sorry crown rule direct british control ओके तो ଏବେ ଆମେ कंपनी रूल पर देखिबा अबाउट द चार्टर एक्ट्स ओके तो एटा गोटे टाइमलाइन दिया हिची तमरो रिवीजन पई तो ए जो एक्ट गुडा को जोटा कंपनी रूल रो पीरियड को चार्टर एक्ट काई कुहा होची तो देखो फर्स्ट ब्रिटिश माने अराइव करथले इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया इन 1600 तो 1600 रे 1600 रे तांकर हमरो ब्रिटेन रो क्वीन एलिजाबेथ वन सी gave east india company a royal charter royal charter is the was the document that clarified the administrative powers the trading monopolies territorial governance of the company in india and beyond okay again जेतु क्वीन देइथले ए चार्टर टाकू तो दे चार्टर टाकू 20 वर्ष रिन्यू करा होथला ऑलराइट तो ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ 1858 ଯାଏ 1773 ରୁ 1858 ଯାଏ ଏସବୁ कंपनी रूल फेस टाकू चार्टर एक्ट्स थ्रू गवर्न कराउथला इंडिया को तो अगेन तो एबे देखिबा हमर फर्स्ट एक्ट होची तमरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कराइतला तो तमे हिस्ट्री जानिथिबो तमर जेंती इंडिया हमर थिला तो तीनटा पार्ट थिला गोटे होची बेंगल आउट होची मद्रास देन बॉम्बे ओके सो 1 2 3 बेंगल मद्रास बॉम्बे तो फास्ट होची ब्रिटिश माने बेंगल को कैप्चर करना सेकंड तापरे साउथ रे तमरो टीपू सुल्तान को हरेला परे साउथ कैप्चर करी गले तापरे मराठास को हरेला परे समर बॉम्बे कैप्चर करी गले ओके तो ए जो चार्टर एक्ट गुडा अकॉर्डिंगली ए हिस्ट्री संगे ही जीवो ए जो रूल ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अकॉर्डिंगली ही इवॉल्व होबो ओके सेटा हमें केमती होबो सेटा देखिबा तो फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो तुम जानचो बैटल ऑफ बक्सर पर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा बैटल ऑफ बक्सर तमर हेइतला 1764 रे ओके 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर पर ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स पाइथला तो तापर 1764 रे तमने डुअल गवर्नमेंट आनिथले डुअल गवर्नमेंट जोटा कि तमर चलीथला 1765 रू 1772 जाए ओके डुअल गवर्नमेंट रे कोन हला ना ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑल द पावर बट नो रिस्पांसिबिलिटी बट द इंडियन नेटिव रूलर दे हैड ऑल द रिस्पांसिबिलिटी बट विदाउट एनी पावर तो ए डुअल गवर्नमेंट पाई बहुत बड़ा रैंपेंट करप्शन होतला प्राइवेट ट्रेड कंपनी ऑफिशियल सर्वेंट माने करथले एक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट करथले पीजन मान को ऑपरेट करथले तो गोटे टाइम एमिति आसला जे कंपनी बैंक्रप्सी आडू गला बट कंपनी रा सर्वेंट माने बहुत फ्लरिश कले ओके तो ब्रिटेन रे ए जिनसटा नोटिस कले तो से माने भाबिले जे कंपनी रा एक्टिविटी को एबे रेगुलेट करबा दरकार बिकॉज़ अगेन ब्रिटेन पार्लियामेंट रे तमे मुझे जेंति कहले चार्टर एक्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया हितला इंडिया रे ट्रेड करिया पई बट एमाने कहला माने जेतु ता रैंपेंट करप्शन सब कले तो अलगा ब्रिटिश रा मर्चेंट माने से माने चाहिले जे ईस्ट इंडिया कंपनी केवल मोनोपोली न मिलु हमको भी चांस मिलु वी विल आल्सो टेक ए पाई ऑफ द
take a pie of what has been distributed in India. Okay, तो ସେମାନେ ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कले जे कंपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करा जाऊ. ओके, ये जो करप्शन जो सब होची तो ताको रेगुलेट करा जाऊ. तो फर्स्ट आसेला तमरो रेगुलेटिंग एक्ट दैट इज इन 1773. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इज वारेन हेस्टिंग्स. ओके, तो देखो मुझे जमी कहली तुम 1 2 3. तो 1 2 3 सब जमी बेंगल मद्रास और बॉम्बे तो ये समस्ते गवर्नर थे. ओके, तो ये प्रति प्रेसिडेंसी रे each presidency was under the charge of a governor. Okay, was under the charge of a governor. तो regulating act रे वारेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल कहगला, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. बिकॉज बेंगल टा से कैप्चर कर सारे आउ 2 3 जमी तुम मद्रास और बॉम्बे दे वर स्मॉल पोर्ट्स, छोट छोट पोर्ट ही था. आउ बेंगल भाया जमी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स नथला ब्रिटिश मानकर. तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट रे गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहगला. बाकी 2 और 3 रे तुम से गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे ही रहिले. ओके, सो वारेन हेस्टिंग्स तुम जानछ तांकर पीरियड होची टाइम पीरियड 1772 टू 1785. 1785 his time period. So he was the तमे एमती कहि पारे he was the last governor of Bengal and he was the first governor general of Bengal. Okay, he was the first governor general of Bengal through the regulating act of 1773. All right, so तमे एटा देखिबो तमरो dual government जेमती कहल तुम डुअल गवर्नमेंट चलता बेंगल रे. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टॉप करा हला. ओके, डुअल गवर्नमेंट को स्टॉप करा गला. एबे तार सब एडमिनिस्ट्रेशन केमती हबो ताको टिके रेगुलेट करा हला. तो फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन इट इज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स इन इंडिया. ओके, तो मु एक्सप्लेन करथली तुम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो जेतु बहुत मैसिव करप्शन होतला तो कंपनी रो करप्शन को रेगुलेट करिया पई ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट को इशू करथला. ओके, so it was central administration, it laid the foundation for centralized governance. Okay, so जेमती सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस माने तमरो एबे रेगुलेटिंग एक्ट रे स्पेसिफाई करा गला जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विल हैव मोर अथॉरिटी कंपेयर्ड टू द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे. Then company's authority, the act recognized the political and administrative role of company. Okay, so Governor General of Bengal appointment Warren Hastings was the first member and 4-member executive council. तो ये दिन सटा important चैप्टर एक्ट मानकर ये दिन सारा confusion बहुत हुए. 4-member executive council. तो एटा कौन 4-member executive council? तो गवर्नर जनरल रो गोटे काउंसिल तैयारी होला जेमती तेतरे 4टा मेंबर रहिबे प्लस 1. दिस इज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. तो दिस स्ट्रक्चर এই কাউন্সিলটা ହିଁ ବେଙ୍ଗଲ को पूरा रेगुलेट करिवो. ओके, बेंगल को रेगुलेट करिवो प्लस गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को भी रेगुलेट करिवो. ओके, सो এই ওয়ানটা হচ্ছে गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. এই যে চারজন হউচନ୍ତି दे वेयर हिज काउंसिल मेंबर्स, दे वेयर हिज काउंसिल मेंबर्स. तमर जेमते आजिका डेट रे तमे जेमते देखो आवर प्राइम मिनिस्टर इज हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो सेमती तमे सेही एनालॉजी लगे परिवो. तो एठी गवर्नर जनरल हेले प्राइम मिनिस्टर, एई माने हेले तांकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो एई माने मिसी कि जहा डिसीजन नेबे सेटा ही गवर्नेंस हबो. ओके, सो फोर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो एटा कहै छै एग्जीक्यूटिव काउंसिल बट यांकर एमाने लेजिस्लेशन भी करूथिले एग्जीक्यूशन भी करूथिले, जेमति कि सेपरेशन नथिला. ऑलराइट, सो 4+1 स्ट्रक्चर स्टार्टिंग हला हमरो रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, तो एई दिनसटा ही मन रखियो. एटा मु आगु जाय के आहुरी भल से एक्सप्लेन करबी. ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गला एट फोर्ट विलियम, एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता. फर्स्ट चीफ जस्टिस होचंती एलिजा एमपी. तो ए सुप्रीम कोर्ट रे तमरो 1 सीजे चीफ जस्टिस रहले, जने चीफ जस्टिस रहले प्लस 3 जण जजेस, 3 जजेस. ओके, एटा होची सुप्रीम कोर्ट. नाउ प्रोहिबिशन होची बैन प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब एमंग कंपनी सर्वेंट्स. जेमति मु कहितल तमर डुअल गवर्नमेंट जो रैंपेंट करप्शन होतला. तो सेही दिन को बंद करिया पई प्राइवेट ट्रेड आ ब्राइब एमंग कंपनी सर्वेंट्स ए जिस को बैन कर दिया गला. ओके, तो आउट रहला तमर ब्रिटिश ओवरसाइट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटरी मैटर्स. ओके, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एटाको COD कहबा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो इथरे को हला ना ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने दे वर द
शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओके शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेमानंको 24 टा डायरेक्टर को अपॉइंट करागला 24 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड फॉर 4 इयर्स ओके 24 टा डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर 4 इयर्स तांको काम होउची तो ए जो मु जेमति कहले तमरो तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ madras and governor of bombay they will report their activities to the court of directors and the court of directors would submit the report before british parliament okay so court of directors emanako kama hochi they will report the revenue civil and military matters of the company to british parliament okay तो 24 जन डायरेक्टर को इलेक्ट करा गला फॉर 4 इयर्स एंड एमाने सब शेयर होल्डर ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोप्राइटर की शेयर होल्डर एमाने ही थे ओके नेक्स्ट कम्स दी अमेंडिंग एक्ट तो देखो एटी जो सुप्रीम कोर्ट गोटे जिनस देखो सुप्रीम कोर्ट जमती आस्तेला सुप्रीम कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट रा गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो ये जो जिनस 4+1 बॉडी एटा को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कि हमें ताको गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कहि परिया जीजीआईसी ओके गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल रो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन रहउथला ओके तो ये एक्ट रे प्रॉब्लम चला जे किसी डिफाइन नै नथला सुप्रीम कोर्ट रो अथॉरिटी कोठी गवर्नर जनरल रो अथॉरिटी कोठी ओके तो सेही जिनस को अमेंड करिया पई तमरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आसला ओके तो ये एक्ट रे प्राय सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन ऊपर ही रेगुलेशन को क्लैरिफाई करा गला ओके सो इन प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन बॉम्बे एंड मद्रास अंडर बेंगल्स गवर्नर जनरल एटा मैं ऑलरेडी कहली ओके तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल will be superior to governors of Bombay and Madras. Okay, এটা 1770 এটা regulating act 1773 रो okay amending act देखो मैंने कहली सुप्रीम कोर्ट रो रेगुलेशंस अगेन वारेन हेस्टिंग्स थे ही वाज स्टिल 1785 काउंसिल प्रोटेक्शन दियाला कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स ओके अगेन आउट भी प्रोटेक्शन दिया गला जे servants of the company are not answerable to the Supreme Court for their official acts. Okay. So Governor General plus Council plus company servants. Company servants they were exempt from Supreme Court jurisdiction for their official acts. Okay. Revenue matter jaha bhi thala they were excluded from Supreme Court jurisdiction. Personal laws देखो Hindus will be Hindu defendants will be tried under Hindu laws. Muslim defendants will be tried under Muslim laws. अपील्स तो प्रोविंशियल कोर्ट रो जहा भी अपील आसीबो सेटा डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल पाको जाई परिबो ओके जीजीआईसी को जाई परिबो बाय बायपासिंग दी सुप्रीम कोर्ट ओके तो ये प्रोविजन टा भी रखा हितला रेगुलेशन पावर गवर्नर जनरल इन काउंसिल could frame rules for provincial courts or councils not supreme court okay तो एथरे ए तो ए एक्ट रे क्लैरिफाई करा गला सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन कोन जीजीआईसी रो जुरिस्डिक्शन कोन आउ किछ केते का मात्रा रे जीजीआईसी को मोर पावर दियाला कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ओके जेमदी ही कैन जीजीआईसी कैन फ्रेम रूल्स फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स आउ प्रोविंशियल कोर्ट रो जहा अपील आसीबो डायरेक्ट जीजीआईसी पाको जीवो तो एमदी ओके देन सुप्रीम कोर्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेवेन्यू मैटर्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 just a second now पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ओके तो ए जिनस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया बोली तमरा सेही टाइम रे दिस एक्ट इज नेम्ड आफ्टर विलियम पिट ओके विलियम पिट ही वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन इन 1784 ओके तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखिलो तादरे दीटा लूप होल अछि ओके से लूप होल को क्लियर करिया पई पिट्स इंडिया एक्ट आसला तो फर्स्ट लूप होल इज देखो तमर जेंति हमें देखिले गवर्नर जनरल जीजीआईसी रो स्ट्रक्चर जेन देखिले 4+1 स्ट्रक्चर ओके 4+1 स्ट्रक्चर 4 जन काउंसिल मेंबर +1 गवर्नर जनरल तो गोटे टाइम रे एमिति आसला जे तो जहां पे डिसीजन निया जीवो दैट डिसीजन वाज टेकन बाय मेजॉरिटी ओके दैट डिसीजन वाज टेकन बाय मेजॉरिटी तो एठी प्रॉब्लम होउजी गोटे टाइम एमिति आसला तो यांको भितर 4 जन जो थिले तांको भितर 3 जन मेंबर जदी टीम अप कर देबे जदी एकर 5 जन मेंबर तो मेजॉरिटी पई तुमको 3:2 हेले भी तुम 3 रो वॉइस टा रहिबो तो कोन हला ना ये जो 4 जन को भितर 3 जन टीम अप जदी कर देले ताले गवर्नर जनरल रो किछि वॉइस रहिबोनी
ओके बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ए लॉ टाको एमती तैयारी करथला जे कीपिंग इन माइंड कि डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल शुड प्रिवेल बट एबे अपोजिट होउची तो तीन जन टीम अप करी गले गवर्नर जनरल को समाने भी बाईपास कर देबे तो एई जिनसटाको रेक्टिफाई करिया पई 3+1 स्ट्रक्चर करा गला ओके 3+1 3+1 स्ट्रक्चर करागला सो दैट जदि भी गवर्न एबे एबे कोन एबे जदि भी गवर्नर जनरल कोनोसी जणे काउंसिल मेंबर रो भी सपोर्ट पाई गला ताल जदि 2:2 जदि हे गला ताहले गवर्नर जनरल जदि भी टाई आसी गला ताहले गवर्नर जनरल हैज द वेटो एंड ही कैन पास हिज ऑर्डर जदि जणे भी काउंसिल मेंबर सपोर्ट पाई गला तो से तार डिसीजन को हिज डिसीजन विल प्रिवेल ओके सो 4+1 को 3+1 करागला जीजीआईसी ର स्ट्रक्चर को आ गोटे लूप होल होची तमर जेमती एथे देखिछ प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन माड्रास एंड बॉम्बे अंडर बेंगल्स गवर्नर जनरल बट एठी किछि क्लियर नथिला तो किए केते तो कहार पावर कहा ऊपर केते रहिबो सेटा क्लियर नथिला तो गोटे इवेंट हेतला तमर जेमती आंग्लो मराठा वार रे तो देखो तमर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हेतला इन 1775 ओके 1775 ର Treaty of Surat sign ହେଇଥିଲା it was signed by the governor of Bombay and Raghunath Rao okay and Bombay governor he pledged his help to Raghunath Rao in 1775 okay Raghunath Rao को सीए हेल्प करथला 1775 रे बट वारेन हेस्टिंग्स अलाउ करनथले बॉम्बे गवर्नर को टू इंटरफियर इन मराठा अफेयर्स बट स्टिल युद्ध हला एंड बॉम्बे गवर्नर गोटे लेटर लिखिथिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड ही गॉट द अथॉरिटी टू कंटिन्यू विथ द वार फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स and a letter पाइला पर court of directors they directed Warren Hastings to help the governor of Bombay in the fight तापर तमरो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हैला तमे जानचो एटा जिन तमरो 1775 रु तमरो 1782 फर्स्ट वार हैला डिस्पाइट द रिलक्टेंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे ऑफ बेंगल सॉरी तो एबे गवर्नर जनरल डिसीजन को एमते बाईपास करा होउजी तो एई लूप होल को रेक्टिफाई करिया को पिट्स इंडिया एक्ट रे कि एथे लिखा हैनी गोटे प्रोविजन ऐड करा गला जे गवर्नर जनरल इन काउंसिल had more powers over governors of Bombay and governors of Madras in matters related to war, revenue and diplomacy. ओके तो जीजीआईसी रा अधिक पावर विल हैव मोर पावर्स एक्सप्लिसिटली कहया गला को जगह मोर पावर रहइबो इन वार रेवेन्यू डिप्लोमेसी माने एनी ट्रीटी दैट इज टू बी साइंड बिटवीन ए नेटिव किंग एंड द ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओके तो एटे ए जिनसटा क्लैरिफाई करा गला जे जीजीआईसी इज सुप्रीम ओके तो आ गोटे जिनस तो ए जिनसटा हला तमर फर्स्ट 3+1 करा गला जीजीआईसी रा स्ट्रक्चर को 3+1 करा हला एटा जिनसटा लिखा हैनी बट एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रोविजन ओके जस्ट लिखि दोजी मु गवर्नर जनरल इन काउंसिल यार स्ट्रक्चर एबे हे गला 3+1 ए जिनसटा प्लीज मन रखियो ओके आ गोटे जिनस करा हला डुअल गवर्नमेंट तयारी गला फंक्शनल डिस्टिंक्शन ओके फंक्शनल डिस्टिंक्शन कंपनी कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल रोल को सेपरेट करा गला तो एठी एक्सप्लेन करा जी डुअल गवर्नमेंट तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे तयारी गला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे तयारी गला तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होची इट कंट्रोल द पॉलिटिकल सिविल मिलिटरी एंड रेवेन्यू अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल मैटर्स ओके तो अगेन तमे जानिचो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल कमर्शियल लूट पई ही इंडिया रे थिले बहुत टाइम पई समान लूट करथले तो कमर्शियल मैटर ही बहुत इंपोर्टेंट तांग पई ओके तो याको गोटे सेपरेट डिवीजन करा हला बाकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तमर पॉलिटिकल सिविल मिलिटरी एवरा सब अफेयर्स दिया गला कमर्शियल मैटर पे सेपरेट पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो जदी प्रीलिम्स रे मन रखिया अछि तमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी जदी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोड कहा कोन कंट्रोल करतला सी बोली कॉमर्स ओके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जदी कॉमर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल होची तमर मिलिटरी पॉलिटिकल सिविल जेमती एठी वर्ड कंट्रोल अछि कंट्रोल मींस डोमिनेशन पूरा अंडर रखिया ओके तो टू डोमिनेट यू हैव टू हैव ए स्ट्रांग मिलिटरी ओके तो मिलिटरी अफेयर्स विल बी अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी कमर्शियल अफेयर्स ओके इटा गला आउ ब्रिटिश पोजेशंस ब्रिटिश टेरिटरीज वेर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अंडर सुप्रीम कंट्रोल ओके तो पिट्स इंडिया एक्ट रे तमरो मेंशन करा गला जे ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे टेरिटरी रखी सेगुड़ा ब्रिटिश कंट्रोल रे अछि ओके पिट्स इंडिया एक्ट देन कम्स द एक्ट ऑफ 1786 एटा किछि नाही जस्ट
गवर्नर जनरल से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कॉर्नवालिस रो टाइम पीरियड तुम 1786 रु 1793 ओके 1793 तो तांको अपॉइंटमेंट करिया को कॉर्नवालिस गोटे कंडीशन रखिथिले जे जदि से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेबे तार से कमांडर इन चीफ भी रहिबे ओके तो कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज वेल एज द कमांडर इन चीफ तांको गोटे ओवरराइडिंग अथॉरिटी रो पावर दिया गला ही कैन ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजंस जोटा ମୁଁ କହିଲି 3+1 स्ट्रक्चर याकू भी एबे गवर्नर जनरल ओवरराइड कर परिबे इन स्पेशल केसेस मींस if if the governor general of Bengal he owns responsibility for his actions then he can override council decisions तो ये पावर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओके नेक्स्ट कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 सेतल गवर्नर जनरल जॉन शोर तमरो 1793 रो 1798 ओके जॉन शोर तो এই जो ओवरराइडिंग अथॉरिटी पावर दिया गला इन स्पेशल केसेस এই प्रोविजन टाକୁ एक्सटेंड करा गला टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ओके এই प्रोविजन टाକୁ परपेचुअली एक्सटेंड कर दिया गला प्रेसिडेंसी कंट्रोल स्ट्रेंथन गवर्नर जनरल्स कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास ताहरी सेंट्रलाइजेशन हला ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड कंपनी मोनोपोली फॉर 20 इयर्स जो चार्टर एक्ट तमे जिन जानतलो 1773 रे हेतला प्लस 20 1793 तो से जो रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट आसला ताकू एबे से चैप्टर को पुणी आथर रिन्यू करा गला 20 वर्ष पई तो कंपनी रो मोनोपोली फॉर ट्रेड वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 इयर्स काउंसिल रेस्ट्रिक्शन जे कमांडर इन चीफ cannot be council member unless appointed okay so it is preferred that commander in chief should not be a council member of the GDIC governor general in council okay financial provision board of control the salary are paid from Indian revenues okay Indian revenue ru तमरो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोटा ताको सैलरी दिया जिवो बिकॉज़ अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ओके तो इंडिया रो जहां भी रेवेन्यू आसिला तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली दैट ऑफिस वाज फंक्शनिंग इन ब्रिटेन बट तांकर जहा सैलरी हबो सेमाने ब्रिटेन टू सैलरी नेबेनी बट इंडिया टू सैलरी नेबे ओके सो दिस इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ एटा भी तमे कहि परिबो आउ चार्टर एक्ट 1793 रे गोटा प्रोविजन थिला जे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे 5 लाख पाउंड एनुअली 5 lakh pound per year annually to the British government from India. Okay. So इनके उड़ा exclusively पूरा drain of wealth में उड़ा provision ही थिला Charter Act 1793 रे. Okay. एबे गला 1793 then Charter Act of 1813. 1813 एबे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो एबे कोन हला ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली एंड करिया पे चैप्टर रे स्पेसिफाई करा गला सो कंपनी रो मोनोपोली एबे देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे एबे सब जो माने सब बिजनेसमैन की बड़ बड़ लोक माने एमार सब देखुचंती एक्चुअली एबे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया सारा कंक्यूर करि गलानी आ तांकर ट्रेड बहुत ही भलो होउची तो से माने भी डिमांड कले जे हमको भी ट्रेड करिया को दियो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड करूची तो ता छडा केतले फ्री ट्रेड लासेस फेयर इकोनॉमी पाई भी प्रोपोनेंट सब आस्तले कैपिटलिज्म रो ग्रोथ होदला से टाइम रे तो से टाइम रे तमरो 1813 बेलू को तमरो डिमांड आसला जे ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को एंड करा जाऊ ओके तो तो से टाइम रे पुणी गोटे इंसिडेंट हेतला नेपोलियन ब्लॉकेड नेपोलियन कोन करथले ब्रिटेन को यूरोप रो लैंड मास को एक्सेस देवा पई ताको ब्लॉकेड कर दैथले तो सेटा को कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड भी करा जाय तो सी नेपोलियन अकॉर्डिंग टू नेपोलियन सो ब्रिटिश द ब्रिटिश their main strength is their economy तो ताको इकोनॉमी को बंद कर दिया ताको मार्केट यूरोपियन मार्केट को बंद कर देले they will automatically fall okay so that was the theory so continental blockade was a large scale embargo imposed by Napoleon from 1806 ରୁ 1814 तो चार्टर एक्ट 1813 रे आसिला ओके इन रेस्पोंस टू दिस ब्लॉकेड कि एबे कंपनी को फ्री ट्रेड दिया जाए एबे अलगा कंपनी माने भी चाहिए इंडिया को जाई ट्रेड कर परिबे ओके सो ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली एंड हेगला बट द कंपनी रिटेन्ड इट्स ट्रेड ऑन टी एंड चाइना ट्रेड स्पेशली ओपियम ओके तो कोन हितरा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोन करछला ना ओपियम प्रोडक्शन करथला प्राइमरली बेंगल रे ओके सो बेंगल रे जो ओपियम प्रोडक्शन करथला ओपियम प्रोडक्शन जहां भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आसथला से प्रॉफिट गुडा को ही से किछि ब्रिटेन को बैक करथला आउ ओपियम को से माने प्राइवेट ट्रेडर्स माने को देई चाइना प्राइवेट ट्रेडर्स को देकी चाइना संगे ट्रेड करथले बिकॉज़ चाइना संगे तांकर जेंति इंडिया रहला तमरो एठी
तुम एपटे चाइना एपटे तुम ब्रिटेन यूके ब्रिटेन तो एठू बेंगल रु ओपियम आसला ओपियम रु जहाँ सरप्लस आसला एटा केते सरप्लस यूके को जाउथला आउ प्राइवेट ट्रेडर मानक थ्रू ओपियम को से सेल करथले चाइना को कहीं सेल करथले बिकॉज चाइना रो टी आसथला इंडिया को ओके चाइना रो टी आसुथला सिल्क आसुथला पोर्सिलेन एंड सेरामिक जहाँ भी लग्जरी गुड आसुथला बहुत गुडे आइटम इंडिया को आसुथला तो इंडिया रु सिल्वर जाउथला चाइना को तो ब्रिटिश इंडिया वाज इन ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना ओके ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना एबे से ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करिया कोन करले ब्रिटिश माने एठू ओपियम बिकिले चाइना को ओपियम इलीगली बिक्री करके सिल्वर आनले तो से ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करिले ओके तो एई जिनसटा चाइना गवर्नमेंट परे तांको सेठी ओपियम वार्स भी हेतला तो ओपियम वार्स भी हेतला सो एटा तमे तो सेहित पई ओपियम ट्रेड टाकू जे ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिला जे जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपनी रो स्किल अछि इकोनॉमी अछि ए जो आ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अछि जे ओपियम रे एते से जदी भलो परफॉर्म करि परछि तो सेही ओपियम ट्रेड टाकू फ्री न करा जाऊ ओपियम ट्रेड टाकू फ्री कलेनी कि जो टी ट्रेड जोटा कि चाइना रो आछि ब्रिटेन को जाउची तो हेटाकू फ्री कलेनी बाकी सब तरह एमाने जाई परिबे एमाने अलगा मर्चेंट माने ट्रेड कर परिबे बट बिकॉज दिस इज एन इलीगल ट्रेड and the EIC is doing a fine job with this illegal trade so let it be तो ए जिनसटा को मोनोपोली एंड करा न जाऊ ओके तो एटा होची तमरो चाइना ट्रेड ओके तो ओके सो monopoly over tea and China trade in opium was not ended by the Charter Act of 1813 okay so crown sovereignty declared crown sovereignty over company territories तो एठी भी तमे देखिबो गोटे तब पिट्स इंडिया एक्ट भी तमरो कंपनी टेरिटरीज फास्ट कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया ओके बट जदी क्वेश्चन पचारिबो तो को एक्ट रे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर हेतला जे क्राउन सॉवरेनिटी वाज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 नॉट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 okay please note तमरो because एट रे क्राउन सॉवरेनिटी वाज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड explicitly declare करा हैतला तो जदी क्वेश्चन आसीबो 1813 is the answer not Pitt's India Act 1784 okay crown sovereignty declare करा गला over company territory taxation power local governments को empower करा गला to levy taxes and punish defaulters okay rule so companies again rule extension companies rule extended for 20 more years over 17 okay 1793 last chapter act तो 1793 रे थिला 1793 plus 20 1813 okay 20 years ପାଇଁ extend करा गला board of control या का power enhance करा गला missionaries the Christian missionaries they were allowed to promote moral and religious freedom moral and religious reform sorry and education grant so it was mandated that companies should spend 1 lakh annually for Indian education okay revenue control separate accounts for territorial revenue and commercial profits okay so इटा थला तमरो 1813 act next 1813 plus 20 कर दियो 1833 पुणी 20 years extend करा गला 1833 बेलू को तमे मु जेंति कहितली तमरो 1 2 3 एबे 1833 बेलू को तमरो ब्रिटिश प्राय कंक्यूर कर सारलेनी तमरो जेंति 1803 रे जेंति मद्रास सॉरी मराठास दे सीटेड ओडिशा टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके 1833 बेलू को समाने प्राय इंडिया कैप्चर कर सारलेनी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गला ओके तो तमे बेंटिंग करो विलियम बेंटिंग करो टाइमलाइन 1828 टू 35 ओके 1828 टू 1835 तो तमे कहि परिबो जे ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल and he is the first governor general of India okay that is William Bentinck first governor general of India that is governor general of Bengal was redesignated as governor general of India Bentinck was the first appointee okay so this was the final step in centralization British India given all India character again ସେମାନେ conquer कर सारलेनी सब जगह India colonization was legalized East India Company became an administrative body okay एबा केवल commercial body नै से पूरा administrative body हिसालानी territories of East India Company were held in trust for his majesty his heirs and successors okay तो ए जिंस देखि त पुनी भाबियोनी जे कंपनी रा क्राउन केबे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कला जे कंपनी रा सोवरेनिटी अछि sorry crown रा सोवरेनिटी अछि कंपनी टेरिटरी ऊपर that is the charter act of 1813 not the charter act of 1784 or the charter act of 1833 okay
1813 रे ही एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कराला क्राउन सोवरेनिटी। ओके अगेन पुणी सेही जिनस को हाँ सेही हाँ सेही जिनस को आउ थरे जस्ट एम्फासाइज कराइथला ये एक्ट रे। ओके कोलोनाइजेशन को लीगलाइज कराला जस्ट एम्फासाइज कराला से एक्ट। ओके ट्रेड मोनोपोली एबे एंड कर दिया गला नो मोनोपोली इन टी एंड चाइना ट्रेड। ओके एबे अलगा माने भी ट्रेड करिया स्टार्ट कले बिकॉज दे न्यू द एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट। ओके एंड द काउंसिल जो आमे ताला गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्लीज रिमेंबर एबे से 3+1 स्ट्रक्चर ही चली। ओके 3+1 स्ट्रक्चर ही चलची। दिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल इज कॉल्ड इट वाज कॉल्ड द इंडिया काउंसिल। ओके legislative powers are centralized. Okay legislative powers of Madras and Bombay government were transferred to governor general of India. Okay एबे कौन हला ना मद्रास और बॉम्बे रो गवर्नर माने ସେମାନେ ଆଉ କିଛି law ବି କରିପାରିବେନି। they can only advise the governor general of India but they have the no power to make laws। तो centralization ର peak, this is the peak of centralization, this is the peak of centralization। okay again एथिरे गोटे प्रोविजन थिला जे एबे एबे ए एक्ट रे स्पेसिफाई करा गला जे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन। ओके एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन इन इंडिया। सो यूरोपियन सेटलमेंट in India got legalized in this act। okay यूरोप रो किए आसी की सेटल करले कि प्रॉपर्टी एक्वायर करले so किछि असुविधा नहीं, they can do it freely। so that paved the way towards wholesale European colonization of India। again इतर गोटे स्लेव मानक पई गोटे थिला जे administration will take step towards welfare of slaves and abolish slavery। okay so slavery को abolish करिया पई instruction थिला and slavery was abolished in 1833। okay this charter act of 1833 this abolished slavery in India। okay again तम गोटे कहथरा जे लॉ पावर जहाँ भी सब तुम 3+1 स्ट्रक्चर एपर्यंत चलता। ओके ये जिनसा देख तुम 3+1 स्ट्रक्चर एपर्यंत चलता। तो ये 1833 एक्ट रे तुम कहगला द गवर्नर जनरल इन काउंसिल will consult an additional member तुम 3+1+1 this additional member was the law member। okay this additional member was the law member। this law member was an expert in Indian laws। okay was an expert in Indian laws। that member was T.V. Macaulay। okay T.V. Macaulay। so T.V. Macaulay he was assigned the law commission। okay the first India law commission हितला 1834 रे। okay according to the charter of 1833 गोटा law commission establish हो। तो law commission establish हला 1834 रे that was chaired by T.B. Macaulay and this law member was an additional member of the governor general in council। okay was an additional member of the governor general in council। so he headed the law commission T.B. Macaulay for codification of Indian laws chaired by Lord Macaulay। this law commission gave its report in 1837। okay 1837 report देले but report को accept करिया ପାଇଁ delay हला because of the 1857 revolt। 1857 revolt ପରେ तमरो 1860 रे ए लॉ कमिशन रो रिपोर्ट टाको फाइनलाइज करा गला। ओके ए 1860 रो ए एक्ट को होइच आमे आज आईपीसी इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड तमे जानछा आईपीसी 1860 को थला गुरु एबे तो बीएनएस हे जाइजी बट आगुर जो आईपीसी 1860 यार एवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑलराइट तो एटा गला तमरो लॉ कमिशन रो गोटे प्रोविजन थला। ओके सिविल सर्विसेज ऊपर तमरो गोटे इंस्ट्रक्शन थला जे ओपन कंपटीशन वाज प्रपोज्ड फॉर सिविल सर्विसेज but this was blocked by court of directors because of their reluctance a limited competition to recruit civil services among the candidates nominated by the court of directors। okay तो ब्लॉक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने कहले आमे जो माने नॉमिनेट करबो केवल तांको भीतर ही कंपटीशन होबो सिविल सर्विसेज पे। ओके सो तो लिमिटेड कंपटीशन एस्टैब्लिश कराला फॉर सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन तमरो 1853 एक्ट रे कराला। ओके आउ again law powers governor general is empowered to amend or repeal laws। okay हम तो ऑलरेडी देखिले
ସବୁ लॉ सी ही करिवो बाकी तमरा मद्रास और बॉम्बे रो गवर्नर माने लॉ कर परिबेनी दे कैन ओनली प्ले एन एडवाइजरी रोल ओके सो आई थिंक इतरे सरला सब चैप्टर एक्ट 1833 रो नेक्स्ट कम्स टू 1853 ओके 1853 प्लस 20 1833 प्लस 20 1853 अगेन 20 इयर्स एक्सटेंशन एबे जो 20 इयर्स एक्सटेंशन दिया हितला 1833 रे एबे कोन चैप्टर एक्ट रे अच्छा 20 वर्ष रो से जो जहाँ चलता सेटा स्पेसिफाई करा हैनी एथरे ओके तो जदी पचारिबो को एक्ट रे को एक्ट रे स्पेसिफाई करा हैनी 20 वर्ष एक्सटेंशन दैट इज द लास्ट चैप्टर एक्ट ओके दिस वाज द लास्ट ऑफ चैप्टर एक्ट तो एथरे स्पेसिफाई करा हैनी जे एक्सटेंशन हबो 20 वर्ष ओके so governor general of india was then lord dalhousie Lord Dalhousie. This is the last chapter act 1793 to 1853 legislative executive separation जी गवर्नर जनरल काउंसिल फंक्शन डिवाइड करा गला एक्सपांडेड काउंसिल प्लस 6 ओके तो ये जिनसटा देखो मु भल से एक्सप्लेन कर दोजी देखो तमरो ये जिनसटा भल से मन रख तमरो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कौन थला तमरो 4+1 स्ट्रक्चर थला दैट वाज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो 1784 17 1784 रे तमरो सेई 3+1 करा गला तमर जो पिट्स इंडिया एक्ट रे तमरो 3+1 करा गला ओके पुणी 17 प्लस 20 कर दियो 1783 प्लस 20 1793 1793 अगेन से 3+1 स्ट्रक्चर रहला पुणी प्लस 20 कर दियो 1813 अगेन 3+1 स्ट्रक्चर पुणी प्लस 20 सही 3+1 स्ट्रक्चर ओके 3+1 स्ट्रक्चर बट 1833 रे गोटे कुआ गला जे एडिशनल लॉ मेंबर को कंसल्ट करा जिवो दिस वाज द एडिशनल लॉ मेंबर ओके तो एटा तमर सेही ऑलरेडी चलची गवर्नर जनरल इन काउंसिल जीजीआईसी ओके 3+1 दिस वाज द लॉ मेंबर एडिशनल लॉ मेंबर तमरा तो टिल 1833 ओके तमरा लेजिस्लेटिव फंक्शंस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एगुडा मिक्स हेगी थिले ओके तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भीतर किसी डिफरेंस ही नथिला बट चैप्टर एक्ट 1853 रे again 20 years 1853 रे this additional law member became a permanent member of the governor general in council तो एबे पुणी से 4+1 हे गला ओके 4+1 हे गला पुणी प्लस 6 जन एक्स्ट्रा मेंबर को अपॉइंट करा गला जेमती लिखा है जी एक्सपांडेड काउंसिल प्लस 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ओके तो एक्सपांडेड काउंसिल प्लस 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स एई जिनस को तमे एमती बुझी परिबो जे तमरो जेमती प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस एमपी माने अछंती ओके सो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ए माने हेले एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाकी टोटल इंक्लूडिंग ऑल अदर एमपी दिस इज द पार्लियामेंट तो यार काम होची एग्जीक्यूटिव ओके बाकी ए टोटल रा काम होची लेजिस्लेचर सिमिलरली तमरो गवर्नर जनरल इज द पीएम ए बाकी चार जन रहिले से माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाकी ए माने सब हेले एमपी ओके तो ए दिट ए तो मोटे कलर चेंज कर दोजी तो ए जिनसटा तमरो 4+1 एटा रहिला गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाकी ए टोटल टा गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल ए टोटल जिनसटा को तमरो मिनी पार्लियामेंट को आला ओके ए टोटल जिनसटा को तमरो मिनी पार्लियामेंट को आला एटा पार्लियामेंट बलिया ही फंक्शन कला ओके तो ए जिनसटा ही इंपोर्टेंट ए चैप्टर एक्ट मानकर तो देखो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेंति हमर इंडिया रे इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो एठो ही गवर्नेंस रो इवोल्यूशन हेजी तो ए जिनसटा तो सेही पय सब पॉलिटी बही रे तमर 1773 रो स्टार्ट करा जाय बिकॉज़ ऑफ दिस 4+1 स्ट्रक्चर ओके तो ए जो 4+1 + 6 ओके ए स्ट्रक्चर टा 4+1 + 6 दिस स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड द governor general this structure was called the governor general council okay legislative council okay eta को इंडिया काउंसिल भी कहा जाता है गवर्नर जनरल okay governor general legislative council और it was also called the indian central legislative council indian central legislative council और मिनी पार्लियामेंट जोटा मैं ऑलरेडी कहि छी
okay, or mini parliament. तो यही जिनसटा 4+1+6 structure, this this operated from Calcutta, till 1911. Okay, 1911 तमरा annulment of partition हला. तो 1912 रे capital was shifted from Calcutta to Delhi. Okay, Calcutta to Delhi shift करा ले. तमरो गोटे इंसिडेंट जानथियो, तमरो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, they bombed this assembly in 1929. Okay, 1920 गोटे फिल्म रे देखाई जेमती सेमाने गोटे कोर्ट रे बॉम्बिंग करथले. तो कोर्ट नो सेमाने ई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे ही बॉम्ब करथले 1929 रे. ओके, तो एबे तो सेही पार्लियामेंट रे ही सेमाने बॉम्ब करथले. तो एई दिनसो ही आजिकार पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट तमरो जेमती पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस एमपी. ओके, पार्लियामेंट रो प्रेसिडेंट एटी अलगा अछंती, एटे नाहिंती, बट एई दिनसो रो ही एई गवर्नर स्ट्रक्चर रो ही दिनसोडा इवॉल्व करछि. ओके, तो अगेन सही जिनस लॉर्ड डालहौसी, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, एक्सपांडेड काउंसिल प्लस 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, टोटल एटा 11 हबो. 6 + 4 + 1 इट इज 11. एटा 12 हबो नि, एटा 11 हबो. ओके, 11 टोटल मेंबर्स रहले प्लस 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर. And court of directors, I mean the court of directors, they were dealing with the commercial functions, that was reduced from 24 to 18. 18 जन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहले, आउट ऑफ दैट 6 were nominated by the crown. मिनी पार्लियामेंट कोन मु तुम ऑलरेडी कहली. लेजिस्लेटिव काउंसिल with British style procedure. Civil services, open competition was allowed by the Macaulay committee in 1854. Indians became eligible for open competition in civil services. Voting rights, fourth law member got full voting rights. Okay, मु जेंति कहली तमरो लॉ मेंबर थिले, एडिशनल लॉ मेंबर 1833 एक्ट रे. तो ये एडिशनल लॉ मेंबर 1853 रे तमरो पसी गले, ताकर मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रे रही गले. ओके, ताकर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल परमानेंट मेंबर हे गले, एंड ही आल्सो गॉट दी वोटिंग राइट्स. ओके, तो एटा गला तमर चार्टर एक्ट्स. देन कम्स दी क्राउन रूल.